How are you all? ओमी बाबा आ गया ओमी गारू इतना sincere we have not expected this much serious preparing very seriously very nice चलो सुप्रभातम देवमाल्या कैसे है 1 minute guys 1 minute I have to start in YouTube also we are starting in YouTube also 1 minute good morning Darkensting good morning Momita so now 20% off is going on an Unacademy subscription use our code मालूम था ना यूनिवर्सल कोड केपीसी विल ले लो यही टाइमिंग सही है देखो बाबू देवमाल्या हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द क्लास यही टाइमिंग सही है आपको सही है पूरा इंडिया को सही नहीं था इतना कम लोग आ रहे देखो रे बाबू देवमाल्या सब सो रहा है ट्रू एवरीवन इज स्लीपिंग नाउ so on Unacademy subscription you get flat 20% 1 year 38,000 and 2 years 57,928 hello Neha good morning after long time I think nowadays Neha is very busy good morning Saif garu so new batch is starting on May 12 all star batch do join everyone oh this much seriousness wow I appreciate your work Darkensting very good keep going so what is today's topic today's topic is Saif garu it's about bearing capacity itself we are talking about shallow foundation please understand correct Devumalya true good morning Asif so bearing capacity chapter a chapter में सिर्फ bearing capacity का बारे में था और will study all types of failures of shallow foundation different types of failures of shallow foundation इनका बारे में हम बात करेगा so पहले what is a foundation foundation is the lower part of structure that bear the load transfer the load foundation is the lower part of structure that transfer the load safely very important that transfer the load safely very important safely good morning Balamurugan good morning राजधानी गारू क्या बोल रहे हैं safely so
So without failure, yes, without any failure, failure नहीं होना चाहिए. Safely कहा, where it is transferring the load, it is transferring load safely to soil. Transferring the load safely to soil. Good, subsoil. Perfectly we can say subsoil. So lower part of the structure that transfer the load safely to subsoil. So these foundations we can classify. Shallow foundation, deep foundation. చెప్పండి సైఫ్ గారు, షాలో కబ్ బోలేగా హమ్, డీప్ కబ్ బోలేగా? When we are going to say shallow and when we are going to say deep. Balamurgan garu, how are you? बताओ रे बाबू, shallow कब बोलेगा हम? B by D or D by B? ओमी बाबा इतना कंफ्यूज कर रहे. D by B. D by B less than or equal to 1. Shallow foundation. Shallow foundation. D by B greater than 1. Again you have given wrong, Mantosh garu. D far greater than B. D far greater than B. दादी गारू नमस्कार, कैसे है दादी जी? तबीयत ठीक हो गया? So D by B less than or equal to 1, D by B greater than or greater than 1. So shallow and deep. Shallow and deep. So deep में whatever we study we call it as pile foundation. Deep में whatever we study pile foundation, well foundations. Pile foundations, well foundation. Shallow में we have spread footing, combined footing, cantilever and raft foundation. These are all the types in shallow. Spread, combined, cantilever and raft. Spread, combined, cantilever and raft. बस ये समझ कर लो, हो जाएगा. And you know isolated footing, ट्रेपेजॉइडल, रेक्टेंगुलर, ये पूरा मालूम था ना हम आपको. बट अभी तक इनका बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आ गया. कोई क्वेश्चन नहीं आ गया अभी तक इनका बारे में. सिर्फ ये याद रखो, बस हो जाएगा. विल मूव ऑन. नेक्स्ट, राइटिंग कंप्लीटेड. राजधानी गारू, अरे इधर भी टीटी बोलेगा. देखो देखो, इधर भी टीटी आएगा राजधानी गारू से. हाँ, टाइप्स बस हो जाएगा. आई हैव गिवन इन पिक्चर्स इन द फुल लेंथ कोर्स ना. ये पिक्चर्स देखो, बस हो जाएगा. डार्कनस्टेन हो गया. अरे वो भी क्लास में नहीं आ गया. देबुमालिया, हाउ ही कैन कॉल? He is absent in the class today. చెప్పండి ఓమి గారు, ఓమి బాబా बताओ. Completed Rajdhani. That is Guddu Payal na, Guddu Payal. Guddu Payal is coming to the class. So now we are going to write a basic
basic terms of bearing capacity. Basic terms of bearing capacity. So bearing capacity का basic terms क्या है? So first we talk about, for example, this is the footing you have given, foundation you have given. You are giving the load with this. You are giving the load, and this total load is acting throughout the area of footing, distributing at the base uniformly, transferring that load safely to soil. This is only na. So it is, for example, transferring load safely to soil at this point. A load of Q distributing through area of footing. A load of Q distributing through area of footing. Yes or no? ये पूरा एरिया ऑफ फुटिंग से स्प्रेड हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ. लोड ऑफ क्यू एक्टिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू एरिया ऑफ फुटिंग. So that load of Q distributing through area of footing and safely कहाँ डिपॉजिट किया? Safely deposited into soil, subsoil. Very good, because this is ground level. So ultimately this is whatever is subsoil only. This is subsoil only, no doubt. Safely deposited into subsoil. Now ये गैप में क्या है रे बाबा? ये गैप में क्या है? ये गैप में soil material is there na? Is it empty? No. Surrounding soil material is there. So that soil material का self weight भी act करेगा. Soil material का self weight that also will act. So this height we can say it as D. Ground level to base of footing. ये सब base of footing तक ले लो. Ground level to ऐसा base of footing तक ले लो D. And its soil's self weight, unit weight, gamma. So that also will be causing damage, na? That also will causing damage. So that is said to be gamma D. Unit weight or self weight, that also will cause damage, and that is gamma D. This is the total load acting at the subsoil per unit area. समझ कर लो. Total load acting at the subsoil per unit area, we call it as gross pressure. Gross pressure, small q. समझ आ रहा है? What is gross pressure? Small q. Small q. Total load acting at a subsoil per unit area. Total load acting at subsoil per unit area. Gross pressure, small q. Small q. अरे Q is discharge नहीं. Q is load. Q is load बाबू. So in geotechnical, Q is load. ऐसा सोच लो. Now, net pressure
only you take this one, if only you take this one, that is net pressure. Q minus gamma d, self weight subtract कर दिया, self weight subtract कर दिया, that is net pressure. Q minus gamma d. हाँ, next we are talking about ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity. ये ultimate bearing capacity क्या रे बाबा? What is this ultimate bearing capacity? हाँ बताओ, इनका बारे में थोड़ा बताओ ना. What is this? So because of cohesion, please, because of cohesion, because of width of footing, because of cohesion, because of width of footing, because of soil's self weight, soil can load certain weight, that is, soil can bear certain load without any shear failure. That gross load, minimum gross load, what the soil can bear, that we call it as ultimate bearing capacity. समझ आ रहा है? Without any shear failure. Soil can carry cohesion, soil can carry self weight, soil carry the footing and its width, because of it work against the shear failure, it prevents the shear failure, that is called ultimate bearing capacity. So maximum gross pressure, soil can bear without any shear failure, that is ultimate bearing capacity ना. shear failure resisted, समझ आ रहा है? shear failure is resisted, resist हो रहा है ना. who is resisting? Cohesion is resisting. हाँ, soil property, soil is resisting with the properties of cohesion. First, with the properties of cohesion, interparticular intergranular bonding, cohesion, footing capacity. Then net ultimate bearing capacity, नेक टूट गया क्या दादी गारू? आज पार्टी देना पड़ेगा, आपका नेक टूट गया ना. नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी सिंपल QNU सेल्फ वेट सब्ट्रैक्ट करो, QU माइनस गामा डी, QU माइनस गामा डी सेल्फ वेट सब्ट्रैक्ट करो, बस हो जाएगा. ओके, नेट अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी QU माइनस गामा डी, समझ आ रहा है? बस सेल्फ वेट सब्ट्रैक्ट करो, हो जाएगा. Net safe bearing capacity, these are the words you need to understand well, because we are using lot of these words in the numerical questions.
net safe bearing capacity. This is the design, design capacity. This is the design capacity. Yes, no. दादी गारू कैन बेर ए वेट ऑफ, इनका बारे में एक स्टोरी बना दूंगा. सो दिस इज अवर मनी दादी. मनी दादी का वेट क्या है? 50 kg. ये मनी दादी का वेट 50 kg. नाउ मैक्सिमम वेट on the head of Mani Dadi she can bear without shear, without rip. Okay, without rip, maximum weight Mani Dadi can bear on her head 100 kg. 100 kg. समझ आ रहा है? So when you take here QU is 150. What is the now total weight? Total weight QU is 150. QU is total weight 150 ना. मनी दादी का वेट निकाल दो. दादी गारू का वेट सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आ रहा है दादी मैडम? नेट वेट मनी दादी कैन बेयर. नेट वेट मनी दादी कैन बेयर 100 kg. 100 kg. अरे हर एक दिन 100 kg देने के बाद दैट इज द मैक्सिमम लोड ना. दैट इज द मैक्सिमम वेट दादी गारू कैन बेयर ऑन हर हेड. मैक्सिमम वेट दादी गारू कैन बेयर ऑन हर हेड 100 kg. छोटा इंक्रीज होने के बाद 100 बिकम 101. क्या हो जाएगा बताओ? 100 बिकम 101 क्या हो जाएगा बताओ? So can we give for failure rip. So can we give for a design condition at the design? Can you give for it? Can you give for it at a design? So at a design we always consider factor of safety. We always consider at a design factor of safety. So that factor of safety, mostly the value, considering factor of safety, I told now, factor of safety value is around 2.5 to 3. So design load क्या हो जाएगा अभी? net safe design load, net safe bearing capacity. So while you are designing, you design for QNU upon factor of safety. While designing, you design for QNU upon factor of safety. Means, for example, you design for a 2.5 load factor of safety. 2.5 factor of safety. So now what is the design safe load? What is the design safe load? 100 upon 2.5 means डिजाइन इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर क्या बोल रहे? अरे 100 upon 2.5 is 40 only ना राजधानी. So 100 kg is maximum bearing load. 100 kg is maximum bearing load on the head of दादी गारू. समझ आ रहे? So दादी गारू का कैपेसिटी मालूम था. So that वी डिजाइन दादी गारू का हेड में सिर्फ 40 kg तक डालो. 40 kg तक डालो. वी कैन गिव ए डिजाइन लोड ऑफ 40 kg ओनली. समझ आ रहा है? वी कैन गिव ए डिजाइन लोड ऑफ 40 kg ओनली. बिकॉज दादी गारू इज ए लेजी गर्ल ना. दैट लेजी गर्ल कैन टेक ओनली 40 kg, नॉट मोर देन दैट शी कैन टेक. दैट इज वाई वी आर गिविंग 40 kg. समझ आ रहा है? सो दैट इट इज सेफ. दादी गारू रिप नहीं हो जाएगा. शी वोंट फेल हो जाएगा. रिप नहीं हो जाएगा. सो विदाउट फेल्यूर यू वांट टू कंटिन्यू स्ट्रक्चर फॉर 100 years. यू कैन गिव 40 kg. इफ यू वांट टू फेल द स्ट्रक्चर इन 30 years, you give 100 kg, 100 kg, 100 kg. At some time it may fail. Every day 100 kg लेने के बाद, every day 100 kg देने के बाद
फेल हो जाएगा ना एट सम टाइम. So without failure, you want to continue the structure for a very long time, you can give that. Understand? Without failure, you want to continue the structure for a very long time, you can give that 40 kg. Now, what is including self weight now? So including self weight, is it included self weight here? Is it included self weight? No. We say safe bearing capacity, which included self weight also, Dadi Garu ka weight also. 40 plus 50, 90 kg. दादी गारू का वेट भी ऐड हो गया. दादी गारू का वेट भी ऐड हो गया. 40 plus 50, 90 kg. So that is what we are going to say here. Safe bearing capacity. Safe bearing capacity. So safe bearing capacity, 1 minute. This is QNS. This is QNS. QS. QS. QNS plus self weight gamma D. Self weight gamma D. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? QNS. Balamurugan, is it clear? Chalo. So you understand all the things very clearly. If you are not understanding, draw this one, write this one. Dadi garu head में 100 kg डालो. But we want to save our ancient Dadi garu. Because of that, instead of 100 kg, ancient Dadi garu से हमको चाहिए ना, we are giving 40 kg. Safe load. नेट सेफ एंड सेफ बेरिंग में, नेट सेफ में सेल्फ वेट कंसिडर नहीं किया. नेट सेफ में सेल्फ वेट कंसिडर नहीं किया. सेफ में सेल्फ वेट कंसिडर किया. अभी चलो, कंप्लीटेड राइटिंग गाइस. विल मूव ऑन नाउ. किसी को चाहिए दादी गारू का स्लाइड? फॉर डिजाइन यू आर नॉट डिजाइनिंग फॉर दादी गारू वेट. समझ कर लो. साहिल का सेल्फ वेट आप डिजाइन नहीं करेगा. दादी गारू का वेट आप डिजाइन नहीं करेगा ना. यू डिजाइन फॉर ओनली सेल्फ वेट. दिस सेफ लोड, नेट सेफ लोड ओनली ना. वट एवर अवेलेबल यू ऐड हो जाएगा. बस डिजाइन में आप समझ कर लो. डिजाइन में नेट सेफ लोड को डिजाइन करो. Whatever available soil ka self weight, that will be added. That's it. We always design for net safe load. Chalo, completed this one. This slide also finished. So till now we discussed about shear only. वॉट एवर स्टार्टिंग से अभी तक ग्रॉस प्रेशर से अभी तक हम शेयर का बारे में बात किया. देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट आल्सो ना. पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट भी हो जाएगा. सेटलमेंट. सो इफ यू टॉक अबाउट सेटलमेंट, दैट वी कॉल एज नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर. नेट सेफ सेटलमेंट प्रेशर. Net safe settlement pressure is Q net without any settlement failure. Q net without any settlement failure. Net safe pressure
net safe pressure without any settlement failure, net safe settlement pressure. So shear छोड़ के only settlement लेने के बाद we don't want settlement to happen. To avoid settlement, what is the pressure, net pressure that we are going to consider is net safe settlement pressure. So finally we need to prevent both shear as well as settlement. So can you design only for shear? Can you design only to prevent settlement? दोनों प्रिवेंट करने के लिए, दोनों रेसिस्ट करने के लिए ना नेट एलावेबल बेरिंग कैपेसिटी, नेट एलावेबल बेरिंग कैपेसिटी, मैक्सिमम नेट प्रेशर, maximum net pressure a soil can take, maximum net pressure a soil can take safely without any shear and settlement failure, without any shear and settlement failure, that maximum net pressure. समझ आ रहा है? Maximum net pressure a soil can take safely without any shear and settlement failure. दोनों रेसिस्ट करेगा, दोनों रेसिस्ट करेगा. गुड मॉर्निंग सुनीता, साइकट. सो आपका पूरा का पूरा बेसिक टर्म समझ आ रहा है? चलो विल मूव ऑन. एनीथिंग मोर? अरे दादी को दीदी कौन रे बीच में? दादी गारू इज ए 1920 पीस. इनका दीदी कैसा आएगा? इनका दीदी नहीं था. राजधानी कंप्लीटेड राइटिंग. मोड्स ऑफ शेयर फेल्योर. सैफ गारू नींद में चल रहे क्या सैफ भाई? मोड्स ऑफ शेयर फेल्योर, जनरल शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर, पंचिंग शेयर फेल्योर. जनरल शेयर फेल्योर, लोकल शेयर फेल्योर, गुड वन. दैट इज वाई दादी जी हम मैम को बाहर निकाल दिया. शी इज नॉट इन हैदराबाद. आई टोल्ड ऑलरेडी, यू नो ना, शी इज डूइंग PhD इन SRM यूनिवर्सिटी. उधर नहीं रहे, इधर नहीं रहेगा. वो SRM यूनिवर्सिटी का बाजू में रहेगा. इधर नहीं तारे बाबा, गुंटूर में रहेगा, गुंटूर में. No, PhD in SRM, they are it is through GATE exam na, Devu Malya. They give stipend. It is a full time PhD. Full time PhD को कुछ पे नहीं करना पड़ेगा. Through GATE na, that is why. Good morning Devu Malya Dev on YouTube. They will give stipend. You don't worry, Devu Garu. 36,000 is a stipend. Safe. So modes of shear failure: general shear failure, local shear failure, punching shear failure.
सो ये जनरल शेयर फेल्यूर किसको आ रहा है? जनरल शेयर फेल्यूर, जनरल शेयर फेल्यूर इज फॉर शैलो फाउंडेशन, शैलो फाउंडेशन. कौन कर रहे? पीएचडी. दादी गारू का मैम कर रहे पीएचडी. लोकल आल्सो फॉर शैलो ना, local also for shallow. Then punching shear failure, deep foundation, deep foundation. So we have so many differences regarding it. I think in plus course we have written 2-3 pages regarding. So we will study only the important, only exactly needed for our exam point. एग्जाम में क्या चाहिए सिर्फ इनका बारे में हम बात करेगा बस. सो नाउ सेटलमेंट कहाँ ज्यादा हो जाएगा बताओ? सेटलमेंट, सेटलमेंट, सेटलमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना. सेटलमेंट इज लेस हियर, हाई and moderate. This one settlement is more in local shear failure. Settlement is more in local shear failure. Bulging of soil कहाँ ज्यादा हो जाएगा? बल्जिंग ऑफ सॉइल कहाँ ज्यादा हो जाएगा? हाई, नेग्लिजिबल, जीरो. लोकल में थोड़ा बल्जिंग था, वेरी वेरी स्मॉल बल्जिंग, स्वेलिंग हो जाएगा, बट इट इज नेग्लिजिबल, इट इज नेग्लिजिबल. बट पंचिंग में जीरो, पंचिंग में जीरो. फेल्यूर इज सडन ना, सडन कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर ना जनरल में, सडन कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर, सडन कैटास्ट्रोफिक फेल्यूर. सो व्हाट हैपेंड लोकल? लोकल में ग्रेड्युअल, पंचिंग में भी ग्रेड्युअल, पंचिंग में भी ग्रेड्युअल. Catastrophic means collapse. Just it collapse in a split second. Just it collapse in a split second. हाँ, brittle. Correct. So phi value is important. Phi. Phi greater than 36 degrees. General shear failure. General shear failure. तो पूरा स्ट्रक्चर फेल्यूर नहीं हो जाएगा ना, ओनली होल, ओनली दैट पोर्शन ऑफ फाउंडेशन को होल बना देंगे. विल द एंटायर स्ट्रक्चर फेल्यूर नहीं हो जाएगा ना. 5 लेस देन और इक्वल टू 28. 5 इज वेरी वेरी लेस, वेरी लेस. सो दीज आर एनफ to solve the questions, whatever it may be theory or numerical. These are enough for modes of shear failure. और ज्यादा नहीं चाहिए, और इनका ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. ठीक है? राजधानी completed writing. हाँ, दिस इज ए शॉर्ट नोट्स वाला सेशन ना, बस हो जाएगा. राजधानी गारू टीटी बोल रहे. ये फुल लेंथ क्लास होगा, प्लस क्लास होगा, यूट्यूब होगा, शॉर्ट कोर्स होगा, टीटी टीटी चलेगा, कभी भी टीटी चलेगा राजधानी गारू को. देखो रे बाबा.
ग्रुप में भी टीटी बोलता। आपका दोस्त ईसा भी बोलेगा दादी गारू, आपका फेवरेट म्यूजिशियन था वो, सिंगर था वो, ऐसा मत बोलो ना इनका बारे में। आप आप आजकल क्लास में नहीं आ रहे ना सैफ गारू, दैट इज वे आपको नहीं समझ आ रहे। हो गया, जल्दी बताओ बाबू। अरे कहाँ चले गए बाबू? Terjagis bearing capacity equation. Terjagis bearing capacity equation. 2 सेकंड और 2 सेकंड चाहिए। हो गया 2 सेकंड। So Terjagi bearing capacity equation, general equation we are writing general shear failure को equation, and people will say it as a strip footing. People will consider this as a strip footing. Conditions लिखो पहले, इक्वेशन किसी को मालूम हो जाएगा, समझ कर लो, इक्वेशन किसी को भी मालूम हो जाएगा, बट कौन सा कंडीशन को यूज करना चाहिए, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्ट्रिप फुटिंग के लिए क्यू यू इज अल्टीमेट बेरिंग कैपेसिटी। हाँ, जनरल शेयर फेल्यूर ओनली, करेक्ट। GSF only we are writing, Nikita. It's about GSF, general shear failure only. So QU, ultimate bearing capacity. Ultimate bearing capacity. So that QU is equal to CNC plus QNQ 0.5 gamma BN gamma. QU CNC QNQ 0.5 gamma BN gamma. So here this is cohesion effect. Cohesion effect, surcharge effect, surcharge effect, width effect, cohesion effect, surcharge effect, width effect. गुड मॉर्निंग अभिषेक। सो अब क्या बोल रहे हम, पहले क्यू यू आ गया ना, देन क्यू यू से क्यू एन यू निकालेंगे, क्यू एन यू, क्यू यू माइनस गामा डी, क्यू यू माइनस गामा डी। नाउ क्यू एन यू से क्यू एन एस आएगा, क्यू एन एस। व्हाट इज क्यू एन एस? क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्यू एन यू बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। गुड नाइट मेस्सी गारू, गुड नाइट। सो देन क्यू एन एस का बाद क्या आ रहा है, क्यू एन एस आने के बाद क्यू एस, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू एन एस प्लस गामा डी, क्यू एन एस प्लस गामा डी। नाउ what is the design condition?
design condition. Whatever load you can give on Dadi Garu ka head, this is Q, load, time to time, which can change. Today 40 kg, tomorrow 30 kg, day after tomorrow 25 kg or 50 kg, ऐसा. You can give a load which is less than or equal to QS. Q less than or equal to QS. दादी गारू का head में how much load डालना पड़ेगा? Actual load. Actual load. Actual load less than or equal to QS. क्या ओंकू गारू को क्या देखना पड़ेगा? देबू मालिया. So what is that QS final formula? QS final formula, QS. QS is equal to QU minus gamma D upon F. QU minus gamma D upon F plus gamma D. QU minus gamma D upon F plus gamma D. So QS. अरे क्या चल रहे कमेंट बॉक्स में? कमेंट बॉक्स में क्या चल रहे बाबू? मिडनाइट डेविल्स का बारे में चल रहे क्या? मिडनाइट डेविल्स, मिस्सी गारू, रिसौटिंडा, हाँ दादी गारू, they won't sleep in night time. Yeah, if you give load greater than Q, Balamurugan, if you give load greater than Q, at any time there is a chance of failure. Within design period itself, before reaching design period itself, failure हो जाएगा. So we need to protect ना, within design period it must not fail. That is why within design period we must maintain Q less than or equal to QS. चलो हो गया काम. So now we are discussing general equation खत्म. जनरल इक्वेशन खत्म हो गया. देन इंडिविजुअल केस टू केस का बारे में बात करना पड़ेगा. अभी केस टू केस का बारे में बात करना पड़ेगा. यू आर टॉकिंग अबाउट क्ले सॉइल. क्ले सॉइल लेने के बाद एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 0 डिग्रीज. अरे बाबू राजधानी जी, क्या सो रहे क्या अभी तक? phi is equal to 0 degrees clay soil को n gamma 0. What is n gamma? Width factor देखो 0.5 gamma bn gamma width effect में. So third factor 0. nq is 1. nq is 1. So what you can write? What you can write now? QU is equal to CNC plus gamma D. CNC plus gamma D. Gamma D is nothing but Q. Gamma D is nothing but Q. Understand? QU is equal to CNC plus gamma D. Footing is placed at ground level. Footing is placed at ground level. क्या हो रहा है? D0 QU is CNC.
Footing placed at ground level D is equal to 0. Footing placed at ground level QU is equal to CNC D0. Footing below ground level, no problem, D exists. Footing below ground level, so D have some value, D exist. Now I am writing QNU. QNU. QNU is equal to QU minus gamma D, CNC plus gamma D minus gamma D. So CNC only QNU now. QNU becomes CNC. QNU becomes CNC. Footing exist. D exist. Footing below ground level. D exist. So what you can take? QNU, net ultimate bearing capacity, is CNC. Net ultimate bearing capacity is CNC. So in clay, QU independent of width ना, third factor चलेगा ना QU में देखो, is there width effect? Is there width effect? So independent of B. QNU independent of both B and D. QNU में only CNC था ना, only there is CNC in QNU. Only there is CNC in QNU. So QNU is independent of B and D. Independent of B and D. Yes, this is only for design consideration. What happened if we put the footing at ground level? What happened? But it never placed at ground level. Only theoretical understanding. Correct, Harshita? It's just a theoretical understanding. That's it. Chalo. Completed writing, Rajdhani ji. Today FM is at 11. Really? I have not seen. Oh, today 11 a.m. only. हाँ 11 a.m. only. चलो, completed writing, guys. Now, so what is C? C for rough footing. For rough footing, C is 5.7. For smooth footing, C is 5.14. C is 5.14.
Rough footing it is 5.7, smooth footing it is 5.14. So ये कौन दे रहे? टेरजगी. This is from Prandtl, and actually this is followed in IS code. हाँ, Meyerhoff, Hansen, Skempton, Meyerhoff, Hansen, Skempton, Meyerhoff, Hansen, Skempton, all they follow smooth footing. They follow smooth footing 5.14. अभी आएगा डिफरेंट शेप्स. अब तक क्या बात किया हम? This is NC, not C. NC का वैल्यू, नॉट C का वैल्यू. अरे NC का वैल्यू. NC for rough footing 5.7, smooth footing 5.14. So दादी गारू अभी शेप्स का बारे में बात करेगा. शेप ऑफ फुटिंग and formula for QU. Shape to shape it will vary. Shape of footing and formula for QU. हाँ, that is correct ना. दादी गारू ओल्ड एज 1920 पीस था. इनको जल्दी नींद खुल हो जाएगा. All old people will wake up early, na? Old people will wake up early. So circular footing. Circular footing QU is equal to 1.3 CNC, 1.3 CNC QNQ plus 0.3 gamma BN gamma. These are the two words will change, na? Only 1.3 and 0.3. 1.3 and 0.3. These are the two values which can vary. And how that is 1.3, how that is 0.3, हम explain किया already. Already we have explained it. Square footing. Same 1.3 CNC QNQ. दादी गारू समझ कर लो अच्छे से. स्क्वेयर होगा तो 0.4 ले लो. 0.4 ले लो. स्क्वेयर फुटिंग होगा तो 1.3 CNC प्लस QNQ प्लस 0.4 गामा BN गामा. स्क्वेयर. Rectangular footing. Rectangular footing. Wow, good understanding, Dadi Garu. Nice. Rectangular footing. Rectangular में how many sides है दादी मैडम? 1 plus 0.3 upon 0.3 into B by L CNC. 1 plus, अरे बाबू प्लस ना माइनस नहीं था ओमी बाबा. 1 plus 0.3 into B by L CNC plus QNQ plus अब 0.5 आ रहा है. 0.5 into 1 minus 0.2 B by L. इधर आएगा माइनस, इधर आएगा माइनस.
0.5 into 1 minus 0.2 b by L gamma bn gamma bn gamma. समझ आ रहा है दादी मैडम? चलो, is everything clear? Shape to shape, footing to footing, different conditions. Terjeg is ultimate bearing capacity. So the thing while solving a numerical question regarding it, आप क्या क्या समझ होना चाहिए मालूम था? क्या क्या समझ होना चाहिए? First, what is the type of failure? Whether it is a local shear failure, general shear failure. First one. Second one, whether they are asking about circular footing, square footing, rectangular footing, strip footing. 4 types are there. Na? Strip, circular, square, rectangular. इनका बारे में सोचना पड़ेगा. After that, what you can think? Whether it is at ground level or not. Whether it is clay or sand. Sand होगा width effect हो जाएगा. Clay होगा total third factor will be 0 ना. Total third factor will be 0 ना. So क्या क्या समझ होना चाहिए? First you need to know about type of shear failure. First you need to know about type of shear failure. Type of shear failure में general shear failure, local shear failure. Then you need to know about shape of footing. While solving a numerical, you have to check next shape of footing. Strip, circular, rectangular, square. Then what you can consider? Whether it is clay or sand. No, first you go for this clay or sand. Clay होगा तो no third term. Third term बाहर चल जाएगा ना. If it is clay, there is no third term. Third term बाहर चल जाएगा. Only first 2 terms are there. Shear failure check based on phi value. Phi 0 होगा clay में क्या हो जाएगा? देबू मान लिया. Phi 0 होगा तो remaining 2 are there ना. Remaining 2. Cohesion is there. Surcharge is there. We have to consider. Good. Sand में no first term. Good Omi Baba. Sand में no first term. C is equal to 0. Sand में. Clay में phi is equal to 0. N gamma 0. N gamma 0. Sand में first term नहीं था. Clay में third term नहीं था. Phi 0 so that N gamma 0 clay में. Sand में first term क्यों? C 0 हो गया. C 0 हो गया. Now footing at ground level. So what you have to find out is footing location. Simple. What you have to find out is footing location. Then based on it, yet a surface D0, no second term. So based on that you can consider na? That whether we have to take the formula for GSF or whether we have to take the formula for LSF, that is based on phi value only. True Debu Malia, correct. चल हो गया काम. समझ आ रहा है? फुटिंग लोकेशन. येट बिलो ग्राउंड लेवल होगा तो
D exist. D exist. Second term exist. Second term exist. So while solving a numerical question related to QU, QNU, these to be considered. These to be considered. That is easy, na? NC they can give mostly, Neha. For NC we can consider again rough, smooth, footing type, rough footing or smooth footing. They can give it. Chalo. Anything more from you? Any more questions? Anything you want to ask? So please go through this today. Tomorrow we'll go regarding local shear failure, and tomorrow we'll finish shallow foundation. Shallow foundation remaining chapter tomorrow same time 7 हो जाएगा. tomorrow also 7 AM जल्दी में ले लेंगे. 7 में हो जाएगा, ठीक है. 7 AM. क्या मेस्सी गारू बोल रहे देखो. So 11 AM में tomorrow we will do. Tomorrow we will finish the chapter and we'll do some numerical questions also. Balamurugan, don't worry. चलो. क्या हो गया रे, रोज ये टाइम रखो. Okay, Harshita, you can do it in recording, Harshita. You can do it in recording. थप्पड़ मिल जाएगा. दादी गारू नहीं उठ जाएगा ना, देबू माल्या. दादी गारू नहीं उठ जाएगा. साइकत आपको कट हो जाएगा. इधर कैसा ऐसा कट हो जाएगा साइकत गारू. क्या रे झूठ बोल रहे बदमाश. चलो, bye bye guys. And FM class is at 11. So FM plus class is at 11 AM. FM plus class is at 11 AM. Okay, done. Bye bye.